Hello, my dear children and parents. Welcome to Indus Valley Public School RAT e-learning classes of English. Children, in this video, we are going to study a poem from your book Beehive, and the name of the poem is The Road Not Taken, composed by Robert Frost. So, children, before we start with the poem, let's have a quick knowledge about the poet. Robert Frost. He was born on 26th March 1874 and he was alive till 29 January 1964. He was an American poet born in San Francisco. He is best known for his short lyric. He admired the qualities of honesty, simplicity, love, and hard work. At the center of most of his poems lies an antithesis, that means contrast, between fact and fancy, reality and imagination, pleasure and purpose, nature and civilization, country and city. Frost was honored frequently during his lifetime, receiving 4 Pulitzer Prizes for poetry. His style is unique because he usually employs a kind of moral lesson after describing a scene or an incident. Despite the surface cheerfulness and descriptive accuracy of his poems, he often presents a dark, sober, that means serious vision of life, and there is a decidedly thoughtful quality to his work. Okay, now a quick review about the poem. That is, this well-known poem is about making choices and the choices that shapes us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common, ordinary experiences. The poem, The Road Not Taken, is a symbolic poem where the road symbolizes our life. The poet says that the path that we do not choose is our life. In our life is the road not taken. That means whatever we have not chosen, whatever we left out, that is the road not taken, and he is going to share his experience for that. He describes his feeling about that choice that he had left in the past. The path which we have chosen decides our future, our destination. The important message that the poet wants to give is that the choice that we make has an impact on our future. And if we make a wrong choice, we regret it but cannot go back on it. Means जो भी हमने चॉइस की है, हमें कभी कभार उसमें पछतावा होता है, बट हम वापस उसको जाके सुधार नहीं सकते. That is what told here. So we must be wise while making choices. So whatever we choose, we should use our wit for choosing it. So now moving towards explanation, stanza wise. So first stanza, 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. So, my dear children, in this poem, poet is standing between a road which is having 2 options. So here, road means life, and 2 roads means choices how to lead a life. So now he is saying that once he was walking down a road and there was a diversion. Diversion means there was 2 types of road. They have 2 different paths, and he had to choose one out of them. Now the poet says that as he was one person, okay, he is one traveler, he is one person, he could not travel on both the roads. Okay, so he had to choose any one out of that. एक ही choose करेगा ना वो, being a one person. So he had to choose one out of these 2 roads. In this line, yellow wood means a forest. A forest with leaves which are wearing out and they are turning yellow because of autumn season. Okay, ऐसा forest जिसकी leaves
जो ट्रीज में लीव्स हैं वो गिर गई हैं, येलोइश हो गई बिकॉज ऑफ द ऑटम सीजन. सो ही इज टेलिंग अबाउट येलो वुड. हियर येलो वुड रेफर्स टू द हार्ड टाइम ऑफ अ पर्सन. ठीक है, एक डिसीजन लेना वो भी तो एक हार्ड टाइम होता है ना. तो उस तरीके के एक डिसीजन लेना है, वो दोराहे पे खड़ा है, डिसीजन लेना है. सो दैट वॉज अ हार्ड टाइम फॉर द पोएट. So it represents a world which is full of people, where people have been living for many years. So now the poet is saying that कि here people used to live for many years and they represent people who are older than the poet, and some of the people are very old. तो उन्होंने अपना डिसीजन लिया, अपनी लाइफ को लीड किया. And now what happened? सो नाउ पोएट इज स्टैंडिंग देयर एंड लुक्ड एट द पाथ. तो वो देख रहा है कि लोग अपनी लाइफ लीड करके चले जाते हैं. नाउ ही हैज़ टू लीड द लाइफ. सो ही इज कंटिन्यूसली लुकिंग एट द बोथ द ऑप्शन, बोथ द रोड. ठीक है, जब हम लोग के पास ऑप्शंस होते हैं तो हम लोग काफ़ी देर तक सोचते रहते हैं. तो सिमिलरली पोएट इज ऑल्सो लुकिंग एट दैट बोथ द रोड. तो जितना हमारा विजन होगा उतनी दूर तक तो हमें दिखेगा, बट कुछ ऐसे जब टर्न आ जाती चीज़ों पे तो हमें सारी चीज़ें गायब नजर आती हैं. सो एवरीथिंग वट एवर टिल टाइम बेंट इज़ नॉट देयर, ही इज़ एबल टू सी क्लियरली. पर बाद में दोनों चीज़ें उसको सेम नज़र आने लगती हैं. जब हमें जितना विजन हमारे पास आता है उतना हमें क्लियर होता है, और जैसे ही हमारा विजन गायब होता है उधर से वो चीज़ें दोनों ही वे में, दोनों ही चॉइसेस में एक जैसी नज़र आने लगती हैं. सो इट इज़ सेड दैट टू वेयर इट बेंट इट अंडरग्रो. तो जहाँ तक दिखा क्लियर था, जैसे ही टर्न आता है उसमें तो दोनों ही, क्योंकि देखो कोई भी लाइफ का आप चूज़ करोगे सिमिलैरिटी रहेगी आपके ऑप्शंस पे, स्ट्रगल पे, सक्सेस पे, एवरीथिंग. सो दैट इज़ व्हाट टोल्ड ओवर हियर. ओके, सो नाउ ही इज सेइंग दैट कि ही वॉज एबल टू सी द पाथ टिल वेयर इट कर्व्ड, आफ्टर विच it was covered with trees and was hidden. It happens in our life also when we have choices. We have alternatives, but we have to choose only one out of them. We take time to think about the pros and cons, merit and demerit, advantages and disadvantages, whether it is suitable for us or not. And only then we take a decision on what path we should choose. Okay, my dear children, hope you have understood the stanza. Now moving towards the poetic devices. So poetic device, first metaphor is there. That means two metaphor is there. Two roads diverged, symbolic for the choice in the life. Yellow wood, symbolic for the hard time of a person's life. Again in the line number 2, 3 and 4 we have anaphora. Since we are seeing that and is used in the beginning of the line. Similarly, simile is used in as far as, and the rhyme scheme of the stanza is A, B, A, A, B. So like wood stood, growth. Wood stood and could. They are sounding similar, so we have marked as A, and both growth sound as same, so they are marked as B. Hope you have understood the first stanza. Now moving towards the second stanza of the poem. Then took the other side just as fair and have perhaps the better claim. Better it was grassy and wanted wear. Though as for the passing there had warned them really about the same. So my dear children, here fair means as good as the other one. Claim is used for better option. Grassy means unused. ठीक है, ग्रास है तो उसको यूज़ नहीं है तो ग्रासी दिख रही है, नहीं तो वो दबी हुई दिखेगी ग्रास. ठीक है, एंड वांटेड वेयर मीन्स हैड नॉट यू बीन यूज्ड, अभी तक यूज़ नहीं किया गया. वांटेड वेयर मीन्स अभी वो यूज़ के लिए रेडी है, यूज्ड, अनयूज्ड पार्ट. ओके, सो नाउ इन दिस स्टैंजा पोएट इज टेलिंग अबाउट द पाथ, हाउ इट इज लुकिंग. फाइन. So the poet kept on looking at one path for a long time. वो कई देर तक एक पाथ के उसने जो बेटर क्लेम किया कि मुझे ये चूज़ करना है. फेयर मतलब वन ही हैव ऑलरेडी चोजन. सो इज कंटिन्यूसली लुकिंग एट दैट पाथ, उसको देख रहा है लॉन्ग टाइम इन ऑर्डर टू चेक इफ इट्स डिसीजन इज करेक्ट और नॉट. देन ही डिसाइडेड कि वॉट एवर आई हैव चोजन इज करेक्ट एंड स्टार्टेड वॉकिंग ऑन द पाथ. ही फेल्ट बोथ दी पाथ आर इक्वली गुड. अब उसने जब चूज़ कर लिया तो उसने अपने मन में एक बना लिया कि चलो दोनों ही रास्ते अच्छे हैं.
He says just as fair. So he felt both the paths were equally good and started walking on one of them. Then he said कि maybe the path is better for him, so he chooses it as it has grass on it, which means that it is unused. तो वो बोलता है मैंने जो पाथ को चूज़ किया है वो अच्छा होगा क्योंकि उसमें ग्रास है, इसको कम लोगों ने सेलेक्ट किया, इसमें कोई अभी गया ही नहीं है. सो आई एम द फर्स्ट हु इज़ गोइंग टू यूज़ इट, सो आई मे बी गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट. ही रियलाइज दैट वे. ओके. And wanted where means that it was not walked over by many people. तो उसमें ग्रास भी ग्रीन है, वो भी दबी नहीं, जैसे कोई उस पर घास पे चल जाता है तो दब जाती है. सो एंड वॉन्टेड वेयर आई ऑलरेडी टोल्ड कि नॉट वॉक, उसको कोई यूज़ नहीं किया हुआ है. तो उस रास्ते को बता रहा है इसे कम लोगों ने यूज़ किया है या नहीं किया है. आई एम द ओनली पर्सन जो उसको चूज़ कर रहा है, तो मे बी आई एम गेटिंग बेनिफिट ऑफ इट, क्योंकि कम लोग गए वहाँ पे, कम कंपटीशन होगा, तो मे बी आई विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन. दिस इज व्हाट द पोएट इज थिंकिंग अबाउट इट. ओके. सो आफ्टर वॉकिंग फॉर सम डिस्टेंस ऑन द पाथ ही रियलाइज दैट both the path had been worn out the same way. So he's saying अब कुछ दूर चला, ठीक है, उसे रियलाइज़ हुआ. जब हम लोग कोई ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं, सपोज यू वांट टू स्टडी हार्ड, आपको लगता है 8th ईजी है, 9th ईजी रहे, मतलब 9th टफ हो जाएगा. पर जब आप अपना 8th के लेवल को पढ़ते हो, फिर जब 9th में आते हो तो आपको लगता है दोनों में ही तो मेहनत करनी है. जब कुछ टाइम बीत जाता है, when you spend some time in your classes, then you realize कि you have to work, when you were in it, you have to work with the same stamina, same enthusiasm, same zeal for getting good marks. When you were in 8, same thing you have to continue with the 9th also. So everywhere same thing is required. So now here poet is saying that after walking for some distance, he realized that both the path had been worn out the same, means बराबर ही चला गया है उसके ऊपर. So both the paths were similar. Even in our life, we take any path or option, but all of them have the same benefit. तो सबके same benefit होते हैं, advantages होते हैं, disadvantages, problems, challenge, and we must face them. Whatever comes in our choices, we must face with confidence. Okay, so we think that we are choosing a better option, but it is not that way. मतलब कई बार होता है कि हमें जो ऑप्शन लिया उसमें ऑब्स्टिकल ज़्यादा आएंगे, बट वी हैव टू फेस. कई बार हमारे ऑप्शंस या हमारा सिलेक्शन गलत होता है, बट वी हैव टू फेस. कई बार अच्छा होता है तो अच्छी स्मूथली चल जाती है चीज़ें, और जब थोड़ा सा चॉइस गलत हो जाती है तो थोड़ा सा ऑब्स्टिकल ज़्यादा आता है, इवन दो वी हैव टू फेस इट. ओके. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द पोएटिक डिवाइस, alliteration is there. So two alliteration are there. Then took the. So TT ka repetition is there. Then wanted where, WW ka repetition is there. Now personification is there because it was grassy and wanted where. So here it is being compared with the life. Okay, life of a person. So it is a personification. It already wrote non-living thing, but it is telling about a life. So personification. Rhyme scheme again same, A, B, A, and B. Now my dear children, moving towards the third stanza. And both the more equally lay, in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. So now in the stanza, trodden means होता है walked over. ठीक है. जब trodden black मतलब जब हम लोग किसी लीफ के ऊपर चल जाते हैं तो वो ब्लैक कलर का अपना ग्रीन से ब्लैक में कन्वर्ट होता है, तो उसके बारे में बोला गया. So trodden means walked over. The poet says that both the path was similar that morning. जब वो मॉर्निंग में खड़ा था तो उसको दोनों ही एक जैसे नज़र आ रहे थे. See, मतलब कि देखो दोनों यहाँ से चल रहा है. I have shown a picture also कि both the paths are similar. Okay, both had leaves on them and no one has stepped on them as they were still green in color. So no step had trodden black, मतलब किसी भी स्टेप से लीव्स ब्लैक में कन्वर्ट नहीं हुई हैं, उसके ऊपर चला नहीं गया है. अगर चलते तो वो ब्लैक कन्वर्ट हो जाती. सो बोथ हैड लीव्स ऑन देम, दोनों ही स्ट्रीट में, दोनों ही पाथ में लीव्स हैं, एंड नो वन हैड स्टेप्ड ऑन देम एज दे वर स्टिल ग्रीन इन कलर, क्योंकि वो लीव्स अभी भी ग्रीन इन कलर थे.
So he decided that that day he would take in one path and keep the other path for another day. उसने एक path को choose किया और एक को छोड़ा. Although he knew that one way leads to another way. उसको पता है एक रास्ता दूसरे रास्ते को मतलब कि रास्ता देखा जाता है. आप एक जगह बढ़ोगे, फिर आप बढ़ोगे, फिर बढ़ोगे, तो जैसे जैसे होते हैं ना, अपने आप दरवाजे खुलते जाते हैं, अपने आप रास्ते मिलते जाते हैं. दैट इज व्हाट टोल्ड ओवर हियर. ही न्यू दैट ही कुड नॉट गो बैक ऑन द चॉइस. मतलब उसे पता था कि वो नहीं आ सकता. देन ऑल्सो ही मेड इट. एंड सिमिलरली even our life, once we have choose an option, we must keep on moving ahead with that option, and we never get a chance to come back and take the other option that we had left earlier. That was telling कि poet कह रहा है कि मैंने एक रास्ता चुन लिया, दूसरा मैं छोड़ रहा हूँ ताकि मैं लौट के आऊँगा. But from inside he is knowing that कि he will never come back to that position. क्योंकि जब एक बार आप बढ़ जाते हो, सपोज करो 10th के बाद आप लोग स्ट्रीम चुनोगे, आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं साइंस लेके बहुत अच्छा कर लूँगा, मैथ्स नहीं बायो लेके करूँगा. बट इन फ्यूचर जब आप बायो पढ़ने लगते हो और डॉक्टरेट की तैयारी करने लगते हो, तो बीच में आपको लगता है इसके टर्म्स बड़े वो हो गए, कैसे करूँगा. जब आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, काश मैंने मैथ्स ले ली होती. सो नाउ यू आर वे अहेड ऑफ इट. आप बढ़ गए हो आगे. देन यू हैव टू वर्क ऑन. आप दोबारा से नहीं आ सकते हो 10th में फिर एग्जाम दो, फिर आप 11th के लिए फिर से मैथ्स चूज करो. नहीं, वो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव प्रोसीडेड योर लाइफ. आप बढ़ चुके हो इस रास्ते पे, क्योंकि आपने 12th एक स्टेप पास किया, फिर दूसरा रास्ता आगे की एजुकेशन के लिए गया, फिर आगे की एजुकेशन के लिए गया. सिमिलरली so you were not able to come back. That is what explained over here. Okay, so here children, I have only one poetic device, that is rhyme scheme. If you know, then you can find it, because I'm not getting. Okay, so only one is there, the rhyme scheme, that is A B A A B. Clear? Hope you have understood stanza number 3. Now coming towards the stanza number 4. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood and I took one less travelled by, and that has made all the difference. So now children, in this poem, in this stanza, we will see that ki when everything is settled in my future, that means poet's future, he will take a deep breath and say, once upon a time. मतलब हम लोग जब पास्ट हो जाता है, फ्यूचर में चले जाते हैं, तो हम लोग पुरानी बातें बताते हैं, एक समय ऐसा भी था, ऐसा कहते हैं ना, दैट वे. सो वंस अपॉन अ टाइम ही हैड रीच्ड सच अ पॉइंट इन लाइफ that there were two options. कितने थे? 2 options for him, and he travelled on that road which had been travelled upon by lesser number of people. So here in the poem, poet have chosen only that part where less people have taken, because less number of competition. Might be he might be successful, the chances are more to get success. So that way he has chosen a road which is travelled by less people. That decision of his is going to decide his future. मतलब जो भी उसने रोड डिसाइड किया है वो उसके बाद क्या होगा, उसका फ्यूचर डिपेंड करता है उस पर. सो सिमिलरली इन फ्यूचर व्हेन यू ग्रो अप, then you will say that once upon a time when you were young, you had 2 options. The 2 choices that you made, what you became of it. This is very strong message for all of you, that you should be wise and be careful while making choices among the options that you are having in your life, because it is going to give a shape to your future. Your future depends on whatever option you are choosing for your life today. मतलब जो आज आप चूज़ करोगे, जो भी आज आप करोगे, उसके ऊपर फ्यूचर डिपेंड होता है. बिकॉज पास्ट तो चला गया, फ्यूचर के लिए हम कर सकते हैं, एंड व्हेन वी विल डू एट प्रेजेंट. सो वॉट एवर वी डू एट द प्रेजेंट, इन दैट फ्यूचर depends. This is what explained over here. Children, here poetic device is not correct. I'll let you know. So poetic devices is ages and ages. You will find alliteration, repetition of a
एंड एजेस में रिपीटेशन है. ओके, and we have a rhyme scheme of A, B, A and B. Clear? So this is what the poetic device used in this stanza. Hope you have understood the poem. If any doubt, do call me up or message me. I will revert you. Okay? Thank you for watching the video. Thank you so much.